Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is business studies and today's topic is types of planning. My dear students, before starting the classification of the types of planning, let us know that what is plan. I have already told you that plan is formulation of certain steps and actions which are essential to achieve certain specific results. It means कि प्लान जो है ये एक ढांचा होता है, एक ऐसा ये जो है एक ऐसी तरकीब होती है, एक ऐसी साख्त होती है जिसमें मुख्तलिफ इक़दामात हम लेते हैं और मुख्तलिफ एक्शंस हम करते हैं। यानी इक़दामात भी होते हैं और अमाल भी होते हैं, अमल भी होता है ये, जो कि फ्यूचर में कुछ रिजल्ट्स के लिए, कुछ मकासद को हासिल करने के लिए जरूरी होता है। यानी ये तरीके जो हैं, ये इक़दामात जो हैं, ये फ्यूचर में कुछ मकासद हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं, तो उससे हम प्लान कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्लान में ये फैसला लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो डीलिंग है इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इन ए पर्टिकुलर सर्विस, वेदर वी शुड कंटिन्यू इट और वी शुड चेंज इट। क्या हमें ये आगे जारी रखना चाहिए या हमें इसे चेंज करना चाहिए? दीज डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। कि फ्यूचर में हमारे जो मुख्तलिफ प्लान जो है, ये जो हमारे स्टेप्स जो हैं, हमारे एक्शंस जो हैं, क्या ये सही ये रास्ते में, क्या ये इनका ये जो है रुझान जो है, या ये क्या ये सही रास्ते पे चल रहे हैं हमारे मकासद को हासिल करने के लिए, या हमें ये चेंज करना चाहिए? ये है प्लान। अब हमें ये देखना है कि प्लान जो है, असली मौजू पर हम आते हैं कि प्लान के टाइप्स जो हैं, इसकी क्लासिफिकेशन जो है, उस लिहाज से प्लान के कितने अकसाम हैं। तो पहली किस्म जो प्लान की है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिन्हें हम मकासद कहते हैं। ये पहला टाइप है प्लान्स का। ऑब्जेक्टिव जो है, ये एक ऐसी पोजीशन होती है एक प्लान की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इज ए पोजीशन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच इन द फ्यूचर। किस हालत पे ऑर्गेनाइजेशन जो है, किस पोजीशन पे, इसका रिजल्ट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, तो कहां पे ये पहुंचने जा रही है, तो इसी दीज आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ दिस प्लान्स। अब ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये दीज आर द एंड रिजल्ट्स, यानी ये जो है कि आखिर पर हमें कहां पे पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये देखना है, हमें 20% जो है सेल्स हमें बढ़ानी है, या हमारा मकसद जो है कि 20% सेल्स हमें बढ़ानी है। उसके लिए हमें जो है कितना मुनाफा हमें हासिल कराएंगे कि 10% जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। सो दे वायर दे हैव टू रीच एट 20% सेल्स and they have to reach at 10% profit. So these are the objectives of the organization. और ये जो है, these objectives they form the basis of the organization. ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होती है। ऑब्जेक्टिव्स है, दे आर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद होती हैं। पहले जो है, इसमें मैनेजमेंट जो है, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स है, उनको फिक्स करती है, उनको सेट करती है
और बाद में इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के तनाजुर में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट हैव टू वर्क, and they are desired, they are given the proper way to function in this field, that what we have to achieve, where we are going to move, what are our end results. So these are the different things which are included in the objectives of the organization. तो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो हैं, इनके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये these objectives must be in a written form. They must be in the written form, that where we have to go, what we have to achieve, what are the targets of the business. All these things are included in the objectives, and it is also essential that for the objectives there must be given a fixed time. And again, one of the important components of these objectives is that these must be given quantitative terms. It must be written in quantity. It must be, the data must be given. Just I wrote here that 20% sales, 10% profit we have to achieve. So it must be in quantitative terms, or somewhere it must be measurable, because the target must be fixed and it must be in quantitative terms, so that everything must be clear. So some of the things which are written in these objectives, that is what is the particular job we are going to start. What is the job that we are going to start? Second thing is what is the aim to achieve? What is our aim to achieve these results? यानी हमारे जो रिजल्ट जो हैं इनको हासिल करने के लिए हमारा मकसद क्या है? This must be mentioned in the objectives. And third is, I already told you that it must be in quantitative terms, that this is the data, this is the target, these are the terms where we have to reach. So these objectives they need to be in quantitative terms. And last but not the least, it must be time bound. So the fixed time, that within 6 months, up to this date, up to this month, our objectives need to be completed. And again, it must be challenging. So objectives need to be challenging, that whatever the condition may be, whatever the cost may be, but we have to achieve the objectives. It must be written there, that it must be time bound, fixed time. Time must be mentioned there, and it must be mentioned, and these objectives need to be challenging, that whatever that we have to achieve these objectives. So this is the first category, this is the first type of plan. Second type is strategy plan. It is strategy. What is strategy? It is a comprehensive plan. It is also a plan, but it is a comprehensive plan. So it is a deliberate plan, that we have already chalked out a program to reach the strategy that we have regarding to a particular plan. And this strategy plan, we are starting this plan in a particular type of environment, but it is said that it is always affected by social environment, legal environment, technical environment, and political environment. So all these environments, they affect the strategy of the strategy plan. They affect the strategy plan. So when an organization or the management starts a strategy plan, there must be clear that these things will affect us, but we have to prepare a strategy. We have to prepare a strategy to cross these different kinds of environments, and the business must continue. It must continue keeping these social, legal, technical, and political environments in view. For example, the strategy plan is that management has to fix that we have to lower the price, or we have to decrease the expenses on the management, the expenses on advertisement. But at that very time, the strategy must be clear.
So this is second type of plan, strategy plan. Strategy plan, it means that what must be the strategy of the management in different conditions in the future. So whatever the condition may be, but we have to keep a strategy to solve all these problems. So it is strategy plan. And the third type of plan, it is policy. First is objective, second is strategy, third is policy. What is policy? These are the general statements that provide guidelines to thinking. So, just as we see कि कोई मसला जो है हमारे यहाँ दरपेश होता है, तो हमें पहले से ही ये डिसाइड करना है कि हमें इस मसले में कोई भी बात जो अनहोनी हो, जो हमें एक्सपेक्टेड न हो, what must be the policy to resolve the problems of that very organization. हम ये भी आमतौर इससे पॉलिसी जो है, पॉलिसी प्लान जो है, ये हमारे पास यूं भी हुआ करते हैं कि हमें आइंदा जमाने में अपने मसाइल हल करने के लिए कौन सी पॉलिसी अख्तियार करनी है. So this is called the policy plan. Policy plan, these are the guidelines of an organization in different situations. These are the guidelines. And then just we say that what is the credit policy of this organization, what is the pricing policy of this organization. These are the different things, different policies of an organization, and they are included in the plans. So it is one of the components, one of these types of plans, that what must be, what our policy need to be in future when we are facing different kinds of these things to reach our goal, to reach our target. So, and then these policies, they are the problem resolving ways of the organization. And organization जो है ये अपने तरीके क्या हैं हमें कि मुख्तलिफ मराहिल में इस अपनी बिजनेस को मतलब एंड तक पहुंचाने के लिए. इसमें यह भी होता है कि अगर किसी मरहले एनीवे इफ देयर वाज a stage, whether at that very stage when we cannot cross the stage, there will be a this crunch policy, or this will be the downfall of the organization. At that very time, what we have to do, what we have the way to get out of it. So this is included in the policy plan. So this is enough for the day. I hope you would have got all these three. Rest of the four types of plans we will try to discuss tomorrow, inshallah. Thanks you.